सोच में सकारात्मकता लाएं, जीवन को बेहतर बनाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 844-844-032। नंबर एक बार फिर सुने 844-844-0632। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस लाइव फोन इन इंटरेक्शन सेशन में और आपके साथ मैं याशु गांधी। हमारे कार्यक्रम का नाम है सहयोग। जैसा कि नाम है सहयोग, एक मानव का दूसरे मानव से सहयोग, ताकि हम सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ें, आगे चलें और खुशहाल जीवन जी सकें। यही हमारा मकसद है और इसी श्रृंखला में हमारा आज का विषय, आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी यूसेज ऑन पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप, यानी कि हमारे आज के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनका अपने अभिभावकों से, अपने परिवार में संबंधों पर किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी का, तकनीकी का। तो आप सबके चेहरों के भाव, यानी कि आप अगर स्टूडेंट हैं या अगर आप पेरेंट्स हैं तो भी ये बता रहे हैं कि आप रिलेट कर रहे हैं इस विषय से। तो सिर्फ रिलेट मत करिए, हमारा ये कार्यक्रम ध्यान से देखिए। साथ ही लगातार स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उसके माध्यम से हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो जो नंबर दिए जा रहे हैं आप उनको मिलाइए, हमसे बात करिए हमारे विशेषज्ञ से इस विषय को लेकर। और चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, आपका तारुफ करवाते हैं सबसे पहले हमारे दो खास मेहमानों से, दो विशेषज्ञों से। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं RIE भोपाल से प्रोफेसर बालाजी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आई एम फ्रॉम नेरी, शिलोंग से, माफ कीजिएगा मैम। वेरी गुड इवनिंग मैम एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू। इसी के साथ हमारे साथ प्रैक्टिसिंग काउंसलर शिवानी मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, वेरी गुड इवनिंग टू यू टू एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से तकनीकी का विकास हो रहा है और वो हम सबके संबंधों को प्रभावित कर रही है। कुछ अच्छे प्रभाव भी हैं, तकनीकी है जो हम यहाँ स्टूडियो में बैठ के आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, आपसे बात कर पा रहे हैं। इसी तरीके से हर अच्छी चीज़ का दूसरा पक्ष भी होता है, लेकिन अगर वो स्याह और सफ़ेद पहलू थोड़े से ज़्यादा हो जाएं अनुपात में या संतुलन में, तो बात कई बार गड़बड़ भी हो जाती है और कई बार संवर भी जाती है। तो इसी विषय पर हम आज बात करेंगे। हमारे दोनों विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवानी मैम, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूँगी कि जब हम बात आज की जनरेशन की करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, तो किस तरीके से उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक तौर पे जो संबंध है, वो कैसे प्रभावित हो रहे हैं तकनीकी के प्रभाव के चलते? Thank you so much, ma'am, for the question. I'll be addressing about how technology has impacted today's youth, not just socially, but also in their cognitive development. As we can see that with the growing advancement and development of technology, it has brought about a lot of changes in every moment in each one of our lives. It has definitely made life a lot easier for each one of us. We can see that technology has made life so easy that, just sitting at home, we can have access to so much. Just with the click of a button, we can get connected to friends all across, be it nearby or far away.
not just that, we get also information about politics, about fashion, about lifestyle, entertainment, everything sitting at home. We are able to make payments online, pay bills. Everything has become so easy for us, I believe. This increasing use of technology definitely has a lot of benefits, yes, but as much as it has benefits, it also has a lot of disadvantages. It has affected people's lives in general, in a positive way and as well as in a negative way. But today we'll be focusing more on how it has impacted negatively on today's youth. As we know that adolescent period, or like, I'll not just say adolescent, but youth per se, the younger generation, it's a very fragile stage, a very crucial and important stage of their life. That is the point where they go through a lot of changes. Their needs change. They tend to give more importance to what they feel is important. They give more importance to their peers rather than what their parents are actually telling them, and they have this constant urge to form their own identity. So they are constantly, in this zone. So now comes in the whole technological advancement. Over the decades, we have seen already how dependent we have become. Like, for instance, the most recent advancement would be, the whole UPI system, how we don't carry cash anymore, and even if we go to a shop, it's everything is so cashless and cardless. Just with a simple app, we can make payments. So this is just one example. Now, when it comes to adolescent, they are much more advanced, I believe. The younger generation, when it comes to how to use technology, they know so much more than the adults, I believe, because they have access to everything. They have phones, they have laptops, they have iPads. But in this process, what we can observe is it has definitely impacted so many other factors. Like, for instance, it has led to a major downfall in the interpersonal relationship between them and the people around them, especially their parents. They hardly communicate. There's this one-on-one physical person communication has gone down drastically. They hardly talk to their parents. They are Absolutely, mostly ma'am. inside, Absolutely, ma'am. their room. They're constantly talking to their friends over social media platforms. We know that there's so many social media platforms like WhatsApp, Instagram, Facebook. So with these platforms being prevalent so much, they're constantly talking and chatting with them instead of actually sitting and communicating with their parents, बिल्कुल telling them what has been going around, or what they did in school or in college. If there's any discussion that needs to be made, that whole discussion has gone down. बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल Eating सही कह रही हैं meals जी. together, yes, बिल्कुल आप eating meals together was one of the ways to bond with the family. But again, we have noticed that when they are eating meals also, they have their phone right by their side. Their academic performance has gone down because this whole concept of regular studies, at least 1-2 hours a day, that has completely gone down. So parents tend to mention that the academic pursuits has been affected. Sleep pattern has been affected. They tend to go to sleep late at night, रात रात भर जागते रहेंगे और फिर देर से सोकर उठेंगे. So the sleep pattern has definitely affected because they're constantly either watching a movie or just talking to their बिल्कुल आप friends. ठीक कह रही है मैम. अगर watching ये Netflix. सारी चीज़ें हैं तो जाहिर सी बात है, जब हम रिश्तों की बात करते हैं, जो मिठास होती है, वो आपसी जो पल एक परिवार आपस में साझा करता है कि मदर या फादर, सारा दिन मदर ने क्या किया, फादर ने क्या किया, बच्चों ने क्या किया, रादर देन उस स्टॉक के एक ही जगह में, एक ही कमरे में आपस में बातें तो हो रही होती हैं, लेकिन वो अपने अपने ग्रुप से, पीयर ग्रुप से, जैसा कि अभी आपने कहा, पेरेंट्स के साथ वो कम्युनिकेशन लैक है, तो शायद मिठास भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है, या किस तरीके से तकनीकी का बदलाव आ रहा है. मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर धनकर आपके पास आना चाहूँगी कि जब हम बात इस तरीके की करते हैं कि जाहिर सी बात है एडोलसेंस एज है, खुद को इम्पोर्टेंस देने की, पीयर ग्रुप में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की चीज़ें हैं, और पूरा का पूरा सोशल मीडिया एक मोबाइल में समाया है, लैपटॉप में, और वो बच्चों के हाथ में है. ऐसे में रिश्ते, खास तौर से माँ बाप, अभिभावकों के साथ बच्चों के, युवाओं के, कितना डायनामिकली, किस तरीके से उसमें बदलाव आया है, आपका नज़रिया इस पे क्या कहता है?
Thank you, Yashu Gandhi, for that question. So there is no doubt that the advancement and the overindulgence of both parents and children in technology has really changed the dynamics of the relationship between the parents and their children. So we can see that family life has completely transformed from the rise of technology, with the use of technology. Everyone is so busy with with work, school, and other curricular activities that families hardly spend any quality time together. It has reached to a point where it seems like parents and children are sometimes texting, emailing each other more than they are talking to each other, even when they are at home together. So this is the present lifestyle we can see which exists nowadays. So we can see that there's more communication, but very less conversation and more of text. Whereas kids need more face-to-face interaction with parents. One of the most highly debated and discussed topic among parents today is screen time. How much is too much? In every household, the discussion among mothers, this is the, in thing and the hot topic which from time to time we discuss. And what impact will screen have on children's development? So one of the impact that which we discuss is that it affects the parent-child relationship. So if we try to analyze the impact of technology on media on both the parents and children, we can say that social media platform such as Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat, WhatsApp, have revolutionized the way we communicate, interact, and also share information. For instance, we found out, some relevant information which is good for our children. So what happens sometimes we just forward and share that information to our children without discussing on it. So technology, social media has become an integral part of our daily life and has a significant impact on modern parenthood as well. So the dependence on these can lead to parents as well as children spending excessive time on different technological devices, which can impact their ability to connect with each other. Uh, if we depend too much on these devices, it can also lead to lack of quality time spent together, which already I mentioned. But most importantly, it will affect the the bond, the connection, the relationship, the parent-children relationship. So that is very alarming. It is very alarming, which we have to check. We have to keep on checking. So it can impact relationship by negatively impacting on our social skills as well. I just like to remind the parents here that they can become distracted and less present with their children because of technological devices. So social media dependence can lead to parents spending excessive time on these devices, which can impact their ability to connect with their children. So that connection will be missing. So most often technology can bring for negative interaction or zero interaction between siblings, couples, or parent-child. So it starts the family of learning and modeling with each other social cues, then interpersonal relationship skills, then communication skills, and bonding. So bonding is very, very important that we have to build. We have to build. So I feel that yes, जी much of technology, indulgence of technology will definitely affect the the parent-child relationship. बिल्कुल। और मैं आप दोनों ही विशेषज्ञों से एक चीज़ और समझना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी अपनी यानी पेरेंट्स की भी अपनी बहुत सारी बाध्यताएं होती हैं, बल्कि कई बार बच्चों का भी होता है कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, बहुत कुछ स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है बच्चों का, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल
न किया जाए ये तो संभव नहीं है, लेकिन कम से कम किया जाए, एक ये बिंदु। और साथ ही एक और बात कि बच्चे बड़ों को देखकर सीखते हैं। अगर पेरेंट्स खुद बहुत ज़्यादा इंडल्ज हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करें, उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, मैं अगर काम के अलावा सोशल मीडिया की या किसी और प्लेटफॉर्म की बात करूं, तो ये चीज़ भी प्रभावित करती है बच्चों को। जी बिल्कुल। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जी, we cannot just completely put the whole thing on the child about technology usage. The राइट। times are nowadays everything is so internet based. Homeworks, assignments are being posted online. यस Everything is मैम, so बिल्कुल। all academic pursuits somewhere हाँ, is very internet based. So they are constantly, again they have to use their phones. But here comes the main part where parents also have to step in to put some line, some division when to stop. Like we cannot always tell the child that they have been, yes of course there is the whole situation of overindulgence with technology and phones and everything, but most of the time it so also happens that we see working parents, both the parents are working parents, they don't have much time to look into what the child is doing, or sometimes it also happens that they just give all of this like iPads and computers, laptops, whatever to the child so that they remain busy. And also comes the whole scenario of how schools and colleges they post everything in the internet or in WhatsApp, their homeworks and assignments. So in this situation, parents also have to step in, I believe, to somewhere draw the line after what time or after how much duration should they stop using. So it's a two-way thing. It's not just a one-way process. This whole reconciliation of the bond between parents and child, we cannot just ask the child to come forward. Even parents have to take equal initiative. It basically both sides have to come forward to form this bonding again, because spending quality time being with each other discussing is so much more, this physical communication is so much more important than just simply texting and telling your parents this is what I need. बिल्कुल शिवानी This मैम, is यहाँ पे something जी बिल्कुल शिवानी मैम, यहाँ पे एक चीज़ और है कि हम यहाँ पर अगर स्पेशली बात कर रहे हैं एडोलसेंस एज ग्रुप में जितने भी हमारे बच्चे हैं, तो अगर अभिभावकों की तरफ से एक खास बात ये भी कि आपने कहा कि वी शुड ड्रॉ अ लाइन, एक कहीं ना कहीं हमें इसको एक स्टॉप चेक एक लगाना होगा। तो ऐसे में हमें इसका भी ध्यान रखना होगा कि बच्चों को ये ना लगे कि वो अपने पेयर ग्रुप से उनसे कनेक्ट होने के लिए पेरेंट्स थोड़ा सा वो कर रहे हैं, या स्टडी के लिए तो ठीक है हमें अलाउ कर दिया सोशल मीडिया का यूज़ या ऑनलाइन यूज़, बट अदरवाइज तो इस चीज़ को भी ध्यान देना होगा। हाँ बिल्कुल ध्यान देना, हर फैक्टर में ध्यान देना पड़ेगा। अभी मैंने बिल्कुल जो बोला है that there has to be some line that the parents have to walk in and then draw that line, right? So what I here want to say is, after a certain point the parents have to tell the child that this is the point where they have to stop using. हर एक चीज का एक लिमिटेशन होता है, देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग, राइट? ओवर इंडल्जेंस इज दैट लिमिट। बिल्कुल। प्रोफेसर बालाडी, एक चीज मैं आपसे जी have to be good listeners also, they have to also be involved. शायद कुछ तकनीकी खराबी है, शिवानी मैम से हमारा संपर्क बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है। प्रोफेसर बालाडी, मैं आपके पास आऊँगी। मैम, अगर हम समस्या समझ में आ गई, समाधान कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन अगर हम प्रॉपरली इसको समझने की कोशिश करें तो ये जो गैप, ये जो खाई है, इसको कैसे जो अभिभावकों और बच्चों के बीच में, संबंधों के बीच में आ गई है तकनीकी की बनाई हुई खाई, इसको पाटे कैसे, इसको ब्रिज कैसे करें? Like I have mentioned before, first thing is quality time is very, very important. After parents reaching home, after they have reached home, after they are home, I think this quality time with children is very, very important. And there are also, and besides quality time, we can also connect, through talking. We can talk with them on any topic. We can dialogue, we can discuss, we can ask if they have any issues, problems. Openness, frankness between parents and children is, very, very important.
So they can, there are also many strategies which they can take it up, like which we can, which parents can take up, like they can spend quality time together, like they can spend time together by watching a movie, any family movie. We can sit down, watch a family movie, going for a walk together, or playing some indoor or outdoor games and sports together. So these are some of the things which can be taken up to bridge, that gap where technology has come in between. So in the midst of the influence of technology, media, etc., we should try to make time for all of these. It will definitely make our children happy. Happiness index is important nowadays. If we spend quality time with our children, it makes them happy. It might clear up many of their issues, problems by discussing. So therefore, it is important to interact with each other, parents with children, children with parents. At the end of the day, when parents and children come home after their busy schedules, because nowadays after school you have tuitions and you have जी other मैम, curricular activities. So to maintain a good bonding, is very important. So that बिल्कुल bonding, गुड बॉन्डिंग इज़ वेरी, bonding, यस मैम, yeah, गुड बॉन्डिंग इज़ वेरी वेरी bonding इम्पॉर्टेंट. among family members. So हाँ, these are that can be taken up. We need also to remind our children that healthy, real world relationships are still very good. So they need to build a relationship with with people that add value to them as a person, and also learn to maintain the relationship with respect and understanding. This will reduce the need to be more to be on social media or to make unreal friends, than virtual friends. Nowadays, they depend more on that. So this is also, healthy real world relationship, which is important with which parent-child relationship is one. So we have to build बिल्कुल on एज this. एन पेरेंट्स हमारी भूमिका होगी थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ के इन सारी चीज़ों को संभालने की, उन रिश्तों को सहेजने की जो हमारा हमारे बच्चों से है, आने वाली पीढ़ी से है. शिवानी मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी बिल्कुल मैम, जी बिल्कुल. समय की कमी है, हम अपने विषय को यहीं कंक्लूड करेंगे और एक लाइन में इसमें और बोलना जोड़ना चाहूँगी. प्लीज़ मेक मी करेक्ट इफ़ आई एम रॉन्ग. कई बार ऐसा होता है कि जो समस्या होती है उसमें भी थोड़ा बहुत समाधान होता है. तो कई बार हम जब बच्चों से बात करते हैं, अगर आपने वर्किंग पेरेंट्स की बात की, तो वर्किंग पेरेंट्स हैं तो कई बार ये भी होता है कि हम अगर सिर्फ चैट और टेक्स्ट की बजाय अगर हम कनेक्ट हो रहे हैं, वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो रहे हैं बच्चे से, वाइल वी आर वर्किंग, अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीका हो सकता है थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन करने का कि बिल्कुल डिसकनेक्ट होने से कम कुछ सेकंड बात की, बच्चे को देखा. तो क्या ये एक तरीका हो सकता है? और इसी के साथ एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपकी तरफ से मैम. जी बिल्कुल. आई फील पेरेंट्स शुड मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट so that children also feel that there is someone to listen to them, when if there's something that's going on with them, or generally they want to talk about what's happening in their day-to-day life, what has Right. happened in school or college. So that connectivity, it all comes down to connectivity, spending time with each other, the close bond. This whole concept of playing board games is diminishing. There was a time when parents would and children, they'd all come together, play a board game, watch a movie together, or maybe find some common shared interest, maybe play a sport or a hobby. So बिल्कुल. these are some of the ways that reconciliation of the bond or bridging the gap, that's what we are focusing on. It can actually help in bridging the gap. And at the end, what I would like to say is definitely technology has impacted each one of our lives, and not just the younger generation, each one of our lives, positively बिल्कुल and मैम, समय negatively. की कमी है, थोड़ा सा वन लाइनर कमेंट. We should focus more on the positive sides. बिल्कुल. Thank you so much. और प्रोफेसर बालाडी, वन लाइनर आपका भी कंक्लूडिंग रिमार्क हमारे आज के विषय पर. I have, nothing much to say. But yes, like I have just, already mentioned. So quality time is important. A strong bond with the children is important. Listening skills, we should have, we should have time to listen to each other.
yes, as working parents, it is very, very important. It's very, very challenging. Sometimes we talk of quality time, but we hardly practice. We don't have the time to we reach home, and and there's so many other work to finish. But जी, I feel like we should make ourselves, we should make ourselves अवेलेबल schedule. और फ्री So फॉर देयर yes, किड्स। so बिल्कुल, manage that time बिल जी accordingly मैम। so that समय की कमी है that मैम, आपको बीच में रोकना पड़ेगा, माफ़ी चाहूँगी। अ, हमारे अभिभावक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमें प्रयास करना होगा, एक नहीं बल्कि 2 कदम आगे बढ़ना होगा अपने बच्चों से, अपने जो ऑलरेडी रिश्ता है उसको और मजबूत करने के लिए। और स्टूडेंट बच्चों, जो आप भी कार्यक्रम देख रहे हो, आपको भी थोड़ी सी कोशिश थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, खुद अपनी जो अपना संसार है वर्चुअल छोड़कर रियलिटी में भी थोड़ा सा जीना होगा। तो इसी के साथ आप दोनों मेरे खास मेहमानों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इस चर्चा में शामिल हुए। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। याशु को दीजिए अनुमति। नमस्कार।